Good afternoon, everybody. On behalf of SME Chamber of India and Maharashtra Industrial Development Association, as well as TIMA, I welcome all of you for this today's event. I'll request CGM sir, GS Rana sir, please come on the dais. I'll request Mr. Chandrakant Salunke ji, Founder and President SME Chamber of India, Mr. Satish Bhambre ji, Joint Director Industries, Konkan Region, Government of Maharashtra, Mr. Mahavir Prasad Gupta, AVP Mechanical Maintenance, JSW Steel Coated Private Limited, Mr. Gogri, President TIMA, please come on the dais. I'll request Mr. Sudesh Vaidya, please join us on the dais. Mr. JC Sankhe, Mr. Anil Ambardekar. So without wasting time, sir, on behalf of Mr. Chandrakant Salunke, Founder and President SME Chamber of India and Maharashtra Industrial Development Association, Mr. Gogri, President Tarapur Industrial Manufacturing Association, as well as principal sponsor of today's event, State Bank of India, Tata Capital. I welcome the dignitaries on the dais, Mr. GS Rana, CGM State Bank of India, Mumbai Metro Circle, Mr. Velji Gogri, President Tarapur Industrial Manufacturers Association, Mr. Satish Bhambre, Joint Director Industries, Konkan Region, Government of Maharashtra, Mr. Mahavir Prasad Gupta, AVP Mechanical Maintenance, JSW Coated Products Limited, Boisar, Mr. JC Sankhe, President PALGHAR Taluka Industry Association, and representatives from Vasai Industry Association as well as Wada Industry Association, and delegates from various industries as well as friends from media and other sector. Friends, I am happy to inform you that Maharashtra Industry Development Association and SME Chamber of India have been working for our last 30 years for the business growth and expansion as well as explore business opportunities at the national and international market. Export promotion, supply to large corporates, MNCs, government PSUs, identifying the foreign partners for joint venture, technology transfers, contract manufacturing, and international collaborations. The association and chamber are supporting manufacturing industries, exports, service providers, all kind of manufacturing industry needs, and business sector for marketing, promotion, branding of products, distribution, franchise, channelizing finance, and investment for business growth and expansion. Assistance to avail various incentives and advantages of various government departments, resolving various issues and grievances related to the manufacturing industries and other businesses. Under the dynamic leadership of Mr. Chandrakant Salunke, who is the founder and president for Maharashtra Industry Development Association and SME Chamber of India, we are resolving and taking issues and grievances with the appropriate government authorities for resolution as well as to provide the level playing field. We are emphasizing to redress the issues related to labor, power, taxation, law and order, harassment by the local goons, labor unions, MIDC, infrastructure, shipping, custom, logistic, transport, warehousing and environment. Mr. Salunke has been regularly coordinating and advocating to secure the interests of the manufacturing industries and SMEs with the Chief Minister, Ministries, Secretaries of State Government of Maharashtra as well as the central ministries, senior police official, diplomats missions, head of the regular authorities, senior executives of financial institutions, Reserve Bank of India, corporates, multinational companies, customs and collectorates. Friends, today's event is purely to integrate the industries from PALGHAR district to address their issues and understand their grievances as well as provide support and assistance to enhance their business activities, identify export business, provide timely banking finance and investments, advances and affordable technologies, marketing and promotional support to connect with the potential buyers, importers, suppliers, manufacturers and service providers. So today's event will provide you the interactive opportunities to share your grievances, suggestions, recommendations to Mr. Salunke to take up with the appropriate authorities. Friends, I would like to express gratitude to the sponsors and supporters via principal partner State Bank of India, Mumbai Metro Division. Special thanks to GS Rana sir
Chief General Manager, who is very dynamic and friendly towards industries to support in order to avail various financial products and services for the future business growth. Special thanks to Mr. Gogri for extending support to organize this event jointly and providing venue for this event. Tata Power is also one of the partner for this event, and esteemed logistic partner Gati and All Cargo Limited, who have been forefront to provide the value addition and quality services for logistic requirements. So to begin with today's event, I would like to invite dignitaries on the dais to inaugurate the summit by lighting up the lamp. So I'll request Chandrakant Salunke ji to present the bouquet to the GS Rana of the CGM State Bank of India. Bouquet to Mr. Satish Bhambre, Joint Director Industries, Konkan Region. Bouquet to Mr. Velji Gogri, President TIMA. Bouquet to Mr. Mahavir Prasad Gupta, AVP, JSW. So to begin with today's event proceeding, I would like to invite Mr. Vilji Gogri, President Tarapur Industry Manufacturing Association, to say a few words. Thank you, Salunke ji. Good afternoon, everybody. SME Chamber of India, President thereof Sri Salunke ji, GS Rana, CGM State Bank of India, Sri Bhambre sir, Joint Director Industries Department, Sri Sankhe, representing PALGHAR Industrial Estate and Industries, Sri Vaidya of our estate itself, then Sri Gupta ji from Jindal, and all the other dignitaries in the audience from various departments, colleagues of Sri Ranaji State Bank of India, DIC, and other industrial estates and the member industries represented by their owners or the representatives. I welcome you on behalf of TIMA to this seminar on SME organized by SME Chamber and Maharashtra Industries Development Association. Definitely, the SMEs are playing a very important role in the growth of the nation, and that is because India has a very great number of technical persons, strength thereof, and also the management experts as well as financial experts who are able to establish the units themselves. And in the beginning, of course, everyone will begin with the small enterprise, and which with their expertise and favorable conditions can grow to the medium size and eventually the large companies as well. In our estate, we have a number of examples of the industries which began as a very small company. Say for example, Galaxy, it began with a 600-meter plot, and today it is one of the listed company with turnover of maybe more than 2,000 crores and exporting to hundreds of nations.
Same is the case of Aarti Drugs, Aarti Industries, and Viraj, NGL, and so on. So, with the proper support from the financial institutions and other government departments, the people have the ability to grow. And I think that is the whole purpose of this department of the SME, to ensure that the small and medium scale companies, they get the favorable conditions with respect to finance, technology transfers, and maybe other benefits with exports, and remove the hurdles or hassles that they are facing by proper representation to the various government departments, so that these industries can prosper and achieve rapid growth. I think the intention of the SME chamber or even SME department is to enroll the people in their fold and see that they are expelled by achieving substantial growth, and they they become the large scale companies. There is a concept that, or rather thinking, that the small and medium scale companies, they are generating the huge employment and revenues as well. But well, if you take the studies, then it is only the large scale companies where the employment is very high and their revenues are also substantially higher. But then, to begin with, I think all of the entrepreneurs, they have to take up this route of entering via small scale, sometimes micro scale and medium scale, and then reach the large scale. As far as our estate is concerned, there is not much scope for availing the land for expansion, but then the industries can always have one unit in Tarapur and look for other partners or the places in other parts of Maharashtra or maybe nearby state of Gujarat. And also, you can think of outsourcing the production, or outsourcing, or having acquisitions and mergers with other companies and grow bigger. Ultimately, by growing large, only we achieve the best for ourselves as well as for the nation. So today's summit, we will have a lot to learn from the experts from the banking sector and the industries sector and other departments, and see how we can use their advice for our growth and expansion. Thank you very much. Now I'll request Mr. Chandrakant Salunke to address this summit. Good afternoon, Namaskar. On behalf of Maharashtra Industry Development Association and SME Chamber of India, I welcome Sri Rana Saab at this very important event, which is focusing purely for manufacturing industry. Special thanks to LG Bhai for supporting and providing assistance for organizing this event. Special thanks to Mr. Mamre ji to attend this event, for particularly to take up your suggestions and recommendations, particularly grievances, to the appropriate authorities. And of course, Mr. Gupta is here also from the large corporate. My dear friend Sudesh is here, and also Mr. Sankhe is here. So friends, on behalf of both the organizers, I welcome you at this important activity. राणा साहब, हम देर से आए लेकिन बहुत दुरुस्त आए. आपके पास गवर्नमेंट की अथॉरिटी आती है, इंस्पेक्टर्स आते हैं, कॉर्पोरेट्स के लोग आते हैं, लेकिन बैंक आपके दरवाजे पे आती है. इसके लिए आप खुद उनके लिए तालियां बजाएं. देखिए, ऐसा है माहौल होता है जैसे हमारी नीड होती है इंडस्ट्री की. इंडस्ट्री की नीड होती है, क्या होती है? तीन बातें, तीन अहम होता है. एक चाहिए मैन पावर, एक चाहिए आपके पास मार्केट, और दूसरा चाहिए मनी. तो मैन पावर एंड मार्केट तो आपको डेवलप करना है, आपको
क्रिएट करना है, बट मनी के लिए बहुत जरूरी होता है, बैंक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो देयर फॉर वी हैव established very good cooperation with the SBI, and I am working with the SBI for last 1993 onwards. इंडिया में सभी बैंक है, लेकिन एसबीआई का जो रोल है, एसबीआई ने जितने एसएमईज को बड़े कॉर्पोरेट किए हैं, मुझे लगता है राणा साहब ये रीजन में ऐसा कहा जाता है डी जोन, लेकिन इस जोन में बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी चलती है, बहुत सारी इंडस्ट्री चलती है, मिस्टर भामरे विल हाईलाइट. और गवर्नमेंट आपके लिए बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज भी डेवलप कर रही है, एक्सपांड भी कर रही है और आपको एक्सटेंड भी कर रही है. इसका फायदा लेना बहुत जरूरी है. रादर मैं कम से कम 1993 से इस ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, और हर टाइम हम महाराष्ट्र के बहुत सारे जिले के बहुत सारे तालुका से जो इंडस्ट्रीज है प्योरली रूरल एरिया में, सो आई टेक अप ऑल द मैटर्स एंड इश्यूज एंड ग्रीवेंसेस टू द अप्रोप्रिएट बॉडीज. जैसे अभी लास्ट मंथ में हमने चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कराई थी, जहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री, डेवलपमेंट कमिश्नर इंडस्ट्री, MIDC के CEO थे, और विषय ये था कि हमारी इंडस्ट्री जो आज हम हमारा खुद का कैपिटल लगा के बैंक से लोन लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते, कंट्रीब्यूशन करते नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन इकोनॉमी के लिए, स्टेट के लिए, तो हमारे इंडस्ट्री का जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर कैसे हो जाए. आप जिस तरह से काम कर रहे हो उस माध्यम से हमें आपको एम्पावर कैसे किया जाए, आपको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, और आपके इश्यूज एंड प्रॉब्लम जो है वो किस प्रकार से ऑन टाइम उसको रिजोल्व कर सकते हैं, ये हमारा एजेंडा है. तो फ्रेंड्स, आज देख रहे हैं आप वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है, इंडिया में रिसेशन नहीं है, लेकिन तो भी हमारी इंडस्ट्री भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, मार्केट के लिए कर रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए कर रही है, मैन पावर भी बहुत मुश्किल से मिलता है, और बहुत सारा ऐसा इशू है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के राणा साहब कि उनको लोन टाइम पे भी नहीं मिलता है. तो आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो अप्रोच है, आपकी जो टीम है यहाँ पर अग्रेसिवली मार्केटिंग करना चाहती है, करना भी चाहिए, और हमारे इंडस्ट्री को जो फाइनेंस की जरूरत है, विदाउट फाइनेंशियल फ्यूल नो बिजनेस विल ग्रो. तो फाइनेंशियल फ्यूल के लिए एसबीआई ने बहुत यहाँ पर फोकस करना जरूरी है. बाकी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम आपके हम बैठे, भामरे साहब बैठे, वेलजी भाई बैठे, उसको हम लेंगे, लेकिन जो जिस तरह से हमें हमारी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, आज अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बढ़ाना है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन को अगर हमें सक्सेस करना है तो हमें बहुत काम करना चाहिए. आज इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रही, हर घंटे में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे एसएमई सेक्टर में क्या कैपेसिटी है, क्या इन्वेंशन करने की? क्यों? क्योंकि आज एक एसएमई एंटरप्रेन्योर कितने पैमाने पे अलग अलग रोल अदा करते हैं. वही परचेस ऑफिसर है, वही बैंक देखता है, वही सेल्स करता है, वही मार्केटिंग सोचता है, वही स्ट्रैटेजी बनाता है, और वही आगे बढ़कर ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करता है. और महत्वपूर्ण है कि आज की डेट में वो कॉम्पिटिटर्स को भी कॉम्पीट करने के हिसाब से दे हैव टू थिंक एंड दे हैव टू फोकस. सो फ्रेंड्स, यही एक मौका है कि हमें आपके कुछ इश्यूज हो, कुछ ग्रीवेंसेस हो, उसको आगे बढ़ाना है, उसको रिजोल्व करना है. और आप अगर समझो मार्केट देख रहे हैं, देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने आज तक कम से कम एक्सपोर्ट प्रमोशन हो या मार्केट डेवलपमेंट हो, उस पर बहुत हमने काम किया हुआ है. और मुझे लगता है कि यही चांस है आपके लिए भी, यही हम सुविधा देना चाहते हैं. दोज आर मैन्युफैक्चरर्स और दोज आर लुकिंग फॉर डेवलपिंग एनी पर्टिकुलर मार्केट, उसमें हम आपको सहयोग कर सकते हैं. हमारे पास एसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, हमारे पास इंपोर्टर्स का डिवीजन भी है, हमारे पास मार्केटिंग का डिवीजन भी है. हमने बहुत सारे ट्रेड डिवीजन सेटअप किए जो कंट्री वाइज, जैसे इंडिया जीसीसी, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री जहाँ पर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उनको अगर जीसीसी का, जैसे गल्फ कंट्रीज में अगर समझो मार्केट जाना है तो वहाँ पर कैसे बढ़ सकते हैं, अफ्रीका मार्केट में कैसे बढ़ सकते हैं, या अगर आप यूरोपियन मार्केट हो, साउथ हो, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर आप कैसे बढ़ना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना, इसमें हम आपको सहयोग दे सकते हैं. हालांकि आज प्रेजेंसी लिमिटेड है, बट मैं आपको एक संदेश देता हूँ. आपके फ्रेंड सर्कल होंगे यहाँ पर, आपके सप्लायर्स होंगे, आपके मैन्युफैक्चरर्स होंगे या आपके बायर्स होंगे. दोज आर हैविंग क्वालिटी प्रोडक्ट and those are in manufacturing industry particularly, and if they are looking to start exports, we will support. बाकी आप चिंता छोड़ दीजिए एसबीआई के ऊपर. एसबीआई हमारी बैठी है आपको पैसा देने के लिए.
बाकी लोकल प्रश्न हो तो हमारे वेलजी भाई बैठे हैं, गवर्नमेंट के लोकल हो तो हमारे बामरे साहब बैठे हैं। अगर आपको कुछ आगे की इश्यू है, स्टेट गवर्नमेंट तक ले जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, हम बैठे हैं। मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत एनजीटी का और पोल्यूशन बोर्ड का बहुत हैरेसमेंट है, लेकिन इसमें भी हमें थोड़ा सा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन देखना है, हमारा रोल भी हमें देखना है, किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। So friends, I will not take much time, but I would like to give you suggestion that if you come out with some proposal, if you come out with a project, my organization will 100% support you and spread this information and message to your business group that if they are looking support, if they are looking any particular assistance, SME Chamber of India and Maharashtra Industry Development Association will be happy to be a partner for your business growth. Thank you and all the best to all the speakers for further proceeding, and special thanks to SBI for providing handholding for organizing this event. And special thanks to उत्तम जी वर्मा जी, आपने ये इनिशिएटिव लेकर अच्छा आपने काम किया। ऐसा ही हम लोग महाराष्ट्र भर में कर सकते हैं। मुझे लगता है एसबीआई के माध्यम से एसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए भारत देश का जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो सपना है पूरा करने के लिए एसबीआई 100% काम कर रही है। मुझे लगता है उनको बधाई देनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू चंद्रकांत सोलंकी सर। राणा सर, मैं आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा। ओवरऑल अगर पालघर डिस्ट्रिक्ट अपन देखें तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में छोटे बड़े मिला के कम से कम 1 लाख यूनिट्स है, जिसमें से 40,000 यूनिट्स रजिस्टर्ड यूनिट्स है एसएमई में। लार्ज यूनिट्स की बात करें हम लोग तो 189-90 के आसपास यूनिट्स है। उसमें फार्मा, केमिकल, टेक्सटाइल, सम ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज एज वेल एज सम प्रोसेसिंग यूनिट्स है। हम लोग अगर तारापुर की बात करें तो तारापुर में 1400 टोटल इंडस्ट्रीज है तारापुर में, जिसमें से 1200 इंडस्ट्रीज पूरी वर्किंग में है अभी। लार्ज टेक्सटाइल यूनिट्स अराउंड 90 के आसपास है, मीडियम 80, वीविंग में अप्रोक्सीमेटली 300 यूनिट्स है यहाँ पे, केमिकल में 500 के प्लस यूनिट्स है, प्लस इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स एंड अदर प्रोसेसिंग यूनिट्स देखे तो 200 यूनिट्स है। तो मेरे हिसाब से अगर ये क्राउड आज का अगर हम मान के चले कि 100 लोगों का क्राउड है तो ये मेरे ख्याल से ये 100 लोग लाख लोगों के बराबर के लोग हो सकते हैं। सो इतना पोटेंशियल पालघर में है एंड वी कैन एक्सप्लोर दैट पोटेंशियल। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस इंडस्ट्रीज को संबोधित करें प्लीज। Thank you, Mahesh ji. Very good afternoon, friends. Chandrakant Solanki ji, Founder President SME Chamber of India, Gogri ji, President TEMA, Bambre ji, Joint Director of Industries, Gupta ji from JSW Steel Coated Limited, Mr. Vaidya, other dignitaries on the dais, and the esteemed, you are the entrepreneurs. See, there are a couple of facts about the SMEs, rather MSMEs. The MSMEs, they contribute for 1/3 of the government's of the Indian GDP. 1/3 of the GDP is contributed by MSMEs. 50% of the export is given by the MSMEs, and around 12 to 13 crore of employment is given by the MSMEs. So the aspirations we have, to reach $5 trillion economy by 2027, that cannot happen unless the MSMEs, they really start firing, they really start growing. We in State Bank, we have always been at the forefront of funding the MSMEs. In the earlier avatar, we used to call it SSI department, but ever since the MSMED Act was enacted in 2006, followed by many industry-friendly amendments, State Bank has been keen to support MSMEs. Internally, we have a dedicated vertical which is headed by the Deputy Managing Director. So we are so keen to support the MSMEs because of the factor, because of the numbers I have given to you. Maybe it's in terms of GDP, maybe in terms of the export, and maybe in terms of the employment generation. In fact, yes, I have worked as DG MSME in this circle. Now the entire state of Maharashtra and Goa, we had initially we call it circle in State Bank of India, but in 2018 we carved out a dedicated circle called Mumbai Metro Circle. So I'm heading that Mumbai Metro Circle, which is basically
District Raigad, District Thane, District Palghar, Mumbai City, and Mumbai South. These are the 5 districts, under my command. And I know Salunke ji, Mahesh ji since 2016 when I was DGM SME of the undivided Mumbai Circle rather. And yes, I have seen them supporting the SMEs, the kind of anxiety, the kind of concern they keep expressing about the growth of MSMEs, their issue, their grievances, taking those grievances to the highest authority in the government. You can see his connect, he connects, I think, with all the top bankers. Not only in the State Bank of India, I think I can see, connecting Salunkeji to all the banks, be it public sector bank, be it private sector bank. So thank you, Salunkeji. In fact, on behalf of the SMEs, I think I would thank you for the support you have been, supporting the MSMEs and the concern you have to, grow MSMEs in India. We have, as I say, the dedicated vertical which is headed by a deputy managing director level officer, and then we have down the line big team to support the MSMEs. In fact, in 2019, bank started at the zonal office level, the zone which is headed by a DGM, giving an AGM who is into only SME, who is only into SME, how to develop the SME business. In fact, around 3 to 4 months back, when Salunkeji first came to my office and he started talking to me about the Tarapur Industrial Hub and about the Mahad Industrial Hub, yes, I immediately agreed. I think I thought of coming and connecting to all of you, because I think we have limited presence. Of course, we have a regional office here in Bhayandar which controls the branches here in this area. But yes, the data which Salunkeji gave me about the industry's presence here in the Tarapur industrial area, I thought of immediately connecting to all of you. Yes, it has taken some time. We have planning for this event for last 2-3 months, but somehow जब समय होता तभी हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं. And as he says, I think we are here to support MSMEs. Having worked as DGM SME in this circle, I know the concern of the SMEs. And yes, the bank, State Bank, which is normally known for sometimes we are slow in taking decisions. But believe me, since I have worked at DGM SME, I keep talking to my team. We have Shautam Burma who is heading our SME view vertical in the local head office. That we should be swift, we should be prompt to the looking into the needs of the MSMEs. So inside the bank we have the small processing cell which takes up the small units up to 50 lakh of funding requirement, but above 50 lakh of funding requirement we have dedicated relationship manager, and one relationship manager typically handles 25 to 30 units, and then he is also supported by a support officer. So I think a full-fledged team we have in our Bashan Industrial Estate, which is actually an SME intensive branch. We have the relationship manager, the CSOs. So we have 19 these SME intensive branches in the circle, wherein we are trying to give all the support to the MSMEs. But I think more than we coming forward, I think we have come to here to this place to listen to all of you. Please give us a frank feedback about the bank. But I am always there to support the MSMEs. In fact, it is for the MSMEs, to see, as Salunkeji ne bola about the 3 M's, I talk of 2 C's. One is credit worthiness and second is credibility. So credit worthiness is that comes to us in the form of a financial. आप लोग जो balance sheet देते हैं, आपका जो data है, that gives us a look at your credit worthiness कि भाई इनको कितनी funding, कितनी limit की जरूरत है. But credibility is entirely in your hand. Maybe credit worthiness, and when it comes to financial, maybe sometimes there are circumstances beyond your control. The financial may not be entirely in your hand because so many outside forces which may not be in your control. But I think when it comes to credibility, creating your history, creating your record inside the bank, that's entirely in your hand. So I think the kind of honesty if you display while you deal with the banks, the kind of hard work you dedicate towards growing your business, it's in your hand. So I think for me these 2 things are very, very important, and it's entirely in your hand. And when it comes to M, the third M, as Salunkeji ne bola, money, we are always there. State Bank is too keen to fund the MSMEs, and this is the first time we have come to Tarapur industrial area, and we have a dedicated team here. I am always available. I keep saying I'll share the kinds of cards I have, the number of cards I have, or I can share my mobile number. I am always available on WhatsApp. You have any kind of problem, you are banking with State Bank of India, or as of now you are non-customer, maybe you are banking with another bank. But I look forward to connecting to all of you, and please give us a chance. Those who of you are not banking with us, please give us a chance to but just try us, give us a try. We are not known for the
probably the expectations customers have, but yes, we are changing. I think अभी आप लोगों ने देखा होगा जो बैंकिंग काफी समय से देख रहे होंगे, स्टेट बैंक का वो बैंक नहीं रहा जो पहले बोलते थे कि जो है इट्स ना सरकारी बैंक, लिथार्जिक बैंक, बट द बैंक है चेंज अ लॉट. एंड आई थिंक स्पेशली आई सी, मैंने बैंक में 31 ईयर्स की सर्विस बैंक में कर ली है. आई वर्क इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, UP, उत्तराखंड, महाराष्ट्र ऑफ कोर्स, एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट अ चांस टू वर्क अब्रॉड आल्सो. तो थोड़ी बहुत जो बैंक की मैंने देखी है, बैंक में काफी परिवर्तन आया. लास्ट 31 ईयर्स में बैंक में हूँ. आई हैव सीन द बैंक फ्रॉम द मैनुअल डेज, द बैंक मास्टर डेज, द स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर आज कोर बैंकिंग में देख रहे हैं. तो बैंकों में जो परिवर्तन आया, द चेंज, आई थिंक it's almost, I think, in all the public sector bank, and we should give credit to the probably post liberalization जो प्राइवेट बैंक्स आए हैं, जो फॉरेन बैंक्स आए हैं, उन लोगों ने हमको भी एक दिया है आई थिंक चांस कि वी शुड चेंज अवरसेल्व्स, अदरवाइज इट बिकम अ हिस्ट्री. सो आई थिंक आज हम आपके पास आए हैं. प्लीज गिव अस योर फ्री एंड फ्रैंक फीडबैक. और जो लोग हमसे बैंकिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज गिव अस अ चांस, जस्ट ट्राई आवर बैंकिंग, इवन फॉर द पर्सनल बैंकिंग ऑल्सो. पर्सनल अकाउंट, आपकी इंडस्ट्री की बात तो ठीक है, आपके बिजनेस की बात ठीक है, लेकिन आप लोग बैंक के जो पर्सनल सेविंग्स बैंक अकाउंट, उसमें आप बैंक की सर्विस को एक बार ट्राई कीजिए. Ever since I have taken over as CGM of this circle, I have given only 2 mantras to my team on the ground. Customer is always right. Even if the customer complains, customer is always right, because some customer is complaining, that means he is giving us a chance to change ourselves. And second is compliance for the bank internally, and I think compliance for the public also. So thank you. I will not take much of our time. My team will be there. Given a chance, we would like to showcase our products we have. But yes, once again, thank you Salungeji, and thank you Tima, Tarapur Industrial Manufacturers Association, to give us a chance, and for chance to associate ourselves with the industries here in Tarapur. Thank you very much, and all the best to all of you. Thank you, Rana sir, for your wholehearted support to this industry. Without wasting time, I will request Bhambre sir to say the few words. आजच्या कार्यक्रमाचे ऑर्गनायझर श्री चंद्रकांतजी साळुंखे, त्यांचे सोबत श्री वैद्यजी VP महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट असोसिएशन, आमचे मित्र वेलजीभाई, कारण वेलजीभाईंचं कायमच कोऑपरेशन असतं. यापूर्वी ह्याच हॉलमध्ये आपण DICचे प्रोग्राम घेतलेले आहेत. आदरणीय CGM सर राणाजी, श्री महावीर प्रसाद गुप्ताजी जिंदाल, आणि आमचे मित्र संखे साहेब. मित्रांनो, महाराष्ट्र शासन हे नियमित आपल्या सोबत असतं, आणि याची सोबत करताना आपल्यासारख्या असोसिएशन, इंडस्ट्रीज आणि बँकर्स, कारण आपल्याला कुबेराशिवाय पुढे जाता येत नाही, धनाची गरज लागते. आणि मला आश्चर्य वाटतं की CGM सर म्हणत होते की आम्हाला आमच्याबरोबर या, आमच्याबरोबर आम्हाला तुमची सर्व्हिस करावीशी वाटते. मला वाटतं सर 100% लोक अशी आहेत की आपल्याला जुळतील. कोणीही नाही SBIशी बिझनेस करायचा आणि असं कोणीही नाही आहे. त्यामुळे ही गोष्ट सगळ्यात आहे. थोडंसं SBIने PR सुधारला पाहिजे, ही गोष्ट आहे. म्हणजे वरिष्ठ स्तरावरचं आहे, पण थोडंसं बँकिंगमध्ये गर्दी होणे, लोन्सच्या बाबतीत जर उदाहरणच द्यायचं असलं तर आमची सगळ्यात चांगली स्कीम आहे CMEGP PMEGP. महाराष्ट्र शासन 15 ते 35% एवढा आम्ही सबसिडी देतो. 35% सबसिडी, 15% स्वतःचा, आणि बँकेचा 50% शेअर असतो. अशा परिस्थितीत जर आम्ही 100% प्रपोजल पाठवलेले, तर आमच्याकडे सगळीच आकडेवारी आहे. कदाचित राणा सरांनाही अवगत असेलही, माननीय मंत्री महोदय राणा सरांशी बोललेले आहेत. पण त्यापैकी 60% प्रपोजल रिटर्न, 10% सँक्शन, आणि उरलेले जे काय 40% आहेत त्याच्यातही चक्रा मारणं चालूच आहे. तर हे थोडंसं कमी झालं, एक टाइमलाईन जर असेल तर चांगलं राहील. ऑफकोर्स अडचणी आहेत, बँकेचे अडचणी आहेत, कोणालाही कर्ज देत सुटणं ही गोष्ट तेवढी हे नाही आहे. पण आज काळ बदललेला आहे. आत्मनिर्भर सारख्या योजना आल्या, पण त्याही योजनेत किती लोकांच्या पदरी पडलं याच्याबद्दलही संशोधनाचा विषय आहे. यातही थोडंसं बँकेने
मला चान्स मिळाला म्हणून बोलत नाहीये, आपल्या वतीने सांगतो, आपल्याकडनं जे ग्रीव्हन्सेस आलेले आहेत ते सांगतो. आता अजून एक विषय आला. ठीक आहे, SBI मी राणा सरांना पर्सनली विनंती करेल की जास्तीत जास्त, कारण आपण अशा जिल्ह्यात आहात की जे एक महाराष्ट्राचं क्रीम आहे आणि अशी MIDC आहे की महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठी MIDC आहे. जर विचार केला पालघर जिल्ह्याचा तर महाराष्ट्रात 3ऱ्या क्रमांकाची SSI MSME रजिस्ट्रेशन आहे महाराष्ट्राच्या. म्हणजे सगळ्यात 1 नंबरला पुणे जिल्हा आहे, 2रा नंबर ठाणे आणि ठाण्यानंतर पालघर. पण पालघर जिल्ह्यात असा एक तालुका आहे की तो महाराष्ट्रात 1 नंबर आहे. तालुका वाईज जर बघितलं तर वसईचं महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त रजिस्ट्रेशन आहे MSME मध्ये. आता साळुंके साहेबांना मी विनंती करेल की त्यांचं SME जे आहे ते नाव आता बदलावं, कारण जुनं झालं. MSME करावं, कारण त्याच्यात मायक्रोची फार गरज आहे. आज जर मायक्रो हा विषय जर लक्षात घेतला तर 2 कोटीच्या आतली प्लांट अँड मशिनरी असलेली युनिट आपण मायक्रो म्हणू शकतो. कारण स्केल वाढलंय, सगळ्याच गोष्टी वाढलेल्या आहेत आणि मायक्रो घटकांना जर आपण दुर्लक्षित केलं तर निश्चितच आपल्याला पुढे काही प्रगती होणार नाही. कारण महाराष्ट्र शासन जितकं मेगा प्रोजेक्ट्स बद्दल विचार करतं तसं मायक्रो प्रोजेक्ट्स बद्दलही विचार करतो. ऑफकोर्स SME जे आहेत त्यांचा विचार सोडलेला नाहीये, त्याच्या योजनांबद्दल आपण चर्चा करणारच आहोत. पण थोडीशी एक गोष्ट खटकली, ती म्हणजे आमचे मित्र वेलजी भाईंनी सांगितलं की महाराष्ट्रात आता लँड स्केअरसिटी आहे, आम्ही आता गुजरातकडे थोडंसं बघतो. तर वेलजी भाई बघू नका, आपल्याकडे लँड स्केअरसिटीसाठी सोल्युशन आहे. कारण ही जी सोल्युशन आहेत ना, ही सोल्युशन सोपी सोल्युशन आहेत. आपणच लँड नाही मिळत नाही प्लॉट अशी करायची गरज नाही. महाराष्ट्र शासनाची इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम आहे, ज्यामध्ये आपण 10 इंडस्ट्रियलिस्ट 15 इंडस्ट्रियलिस्ट एकत्र येऊन 10 हेक्टरपेक्षा जास्त जागा घ्या, तिला येण्यासाठी आम्ही सपोर्ट करू. तिच्यासाठी 25% तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चरवर खर्च करा, 75% आम्ही खर्च करतो आणि MIDCच्या माध्यमातून रस्ते, ड्रेनेज, वॉटर सिस्टम, ह्या सगळ्या ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या फॅसिलिटीज आहेत त्या आम्ही उपलब्ध करून देऊ. या योजनांच्या माध्यमातून तुमचा लँड स्केअरसिटीचा विषय कमी होईल. पॉवरचा विषय आत्ताच बऱ्याच वेळेला बऱ्याच अंशी इंडस्ट्रियलिस्टनीच पुढे येऊन तो आणलेला आहे की सोलर कन्व्हर्जन झाल्याने MSCDCLने बऱ्यापैकी सोलर कन्व्हर्जन केल्यामुळे पॉवरचे इश्यूज आपल्याला फारसे येणार नाहीत महाराष्ट्रात. महाराष्ट्र इज ऑलवेज गुड डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्रीज आणि महाराष्ट्रातल्या इंडस्ट्रीजनी कृपया करून बोलू नका की आम्हाला दुसरीकडे जायचं आहे. तुमच्या अडचणी सांगा, आम्ही त्या सॉल्व्ह करतो. त्यात आपल्याला जो ग्रीव्हन्सेस रिड्रेसल फोरम हाही एक विषय आता नकळत आला. ग्रीव्हन्सेस रिड्रेसल फोरम महाराष्ट्राने ऑलरेडी केलेला आहे. EODB म्हणजे ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या अंतर्गत, म्हणजे केंद्र सरकारची ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ही स्कीम आहे आणि त्या स्कीमच्या अंतर्गत आपण मैत्रीची स्थापना केलेली आहे. मैत्री हा शब्द आपण जर गुगलवर टाकला आणि इंडस्ट्रीशी कोणत्याही डिपार्टमेंटच्या संबंधित तुमचे ग्रीव्हन्सेस असतील तर तुम्ही ईमेल करा, त्याचा फॉलोअप मैत्री घेते. मैत्री हे VTच्या जवळ ऑफिस आहे, जिथे प्रत्येक डिपार्टमेंटचे सिनियर ऑफिसर्स एक सिनियर ऑफिशियल्स असतात. जर समजा MPCBचा विषय असेल तर MPCBच्या अधिकाऱ्याकडे जातो, ते अधिकारी कन्सर्न अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतात आणि तुम्हाला त्याचं उत्तर देतात. इवन यू कॅन गो फॉर DIC, ग्रीव्हन्सेस असतील DICच्या संदर्भात तरीही तुम्ही मैत्रीच्या फोरम जा. दॅट इज अवेलेबल फॉर ऑल. ग्रीव्हन्सेस रिड्रेसल फोरम हा आपला 2 वर्षापूर्वी झालेला आहे आणि तो आता अत्यंत सुंदर पद्धतीने चालू आहे आणि याचा आपल्याला टेस्ट घ्यायची तर घेऊ शकतात. कुठेही काम अडलेलं असेल तर निश्चितच आपल्याला मैत्रीच्या पोर्टलवरनं मदत होईल. हा मैत्रीच्या पोर्टलवर आपल्याला बँकिंग अजून आम्ही जोडलेलं नाही, पण ते लवकरच जोडलं जाणार आहे. बँकेचे जे चर्चा आहे, पण बँकिंग सध्या नाही आहे. बँकिंग सोडून जे महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत जेवढे डिपार्टमेंट्स आहेत त्यांचं
ग्रीव्हन्सेस रिड्रेसल फोरम उपलब्ध आहे. आता मुद्दा येतो की उद्योग विभाग काय करतात. आता पहिलं असं आहे की मी तुम्हाला सांगितलं की छोटे छोटे, आत्ताच मी सांगितलं की CMEGP PMEGP. छोटं म्हणजे काय की CMEGP आणि PMEGP ह्या दोन्ही योजना 50 लाखाच्या आहेत. तर या योजनेमध्ये जे लाभार्थी लाभ घेतात तेच पुढे आपल्यासारखे इंडस्ट्रियलिस्ट होतात, किंवा आपले जे जवळचे कोणी आप्तेष्ट असेल, कोणी असेल, तर त्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायला सांगा. निश्चितच चांगल्या योजना आहेत, त्याच्यात चांगली सबसिडी उपलब्ध आहे. त्यानंतर समजा इंडस्ट्री टाकली, तर इंडस्ट्री टाकल्यानंतर आम्हाला कदाचित आता आपल्यासाठी पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ह बहुतेकांना माहिती असेल, काहींना माहित नसेल. तर पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ह सांगायलाच 1-1.5 तास लागेल, पण थोडक्यात सांगतो की जर पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्हच्या सर बँकिंगच्या बाबतीतही मी आपल्याला सांगतो, कदाचित राणा सर मी नंतर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सांगेल की बँकिंगच्या संदर्भातही सांगायचं वाटतं की जर आपण कोणाला लोन दिलेला असेल, एखाद्या SME ला लोन दिलेला असेल आणि तो C झोन आणि त्यात CDD+ नो इंडस्ट्रीज झोन मध्ये असेल, तर त्याला आम्ही इन्सेंटिव्ह देतो. ती इन्सेंटिव्ह आहेत, पहिला इन्सेंटिव्ह आहे की तो म्हणजे वॅट होतं, आता GST पूर्ण नाही, फक्त स्टेट GST, SGST आम्ही रिफंड देतो, ती 100%. त्याच्यानंतर 5% इंटरेस्ट सबसिडी रिफंड देतो. त्याच्यानंतर जे ED रिफंड आहे तो ED एक्झम्पशन आता कन्वर्ट झालंय, ED रिफंड गेलंय, आता ED एक्झम्पशन आहे की 10 वर्षासाठी आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी एक्झम्पशन मिळेल. आणि शेवटचं म्हणजे 1 रुपीज पर युनिट तुमच्यासाठी 50 पैसे पर युनिट DD+ ला पुढे 1 रुपीज पर युनिट पॉवर जी काही वापरलेली आहे ते रिफंड देतो आम्ही. थोडासा तो अभ्यासाचा विषय आहे, मोठी स्कीम आहे, समजून घ्या. इंटरनेटवर पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ह 2019 जर आपण गुगल केलं तर आपल्याला मिळेल. आणि हे सगळ्यात चांगले इन्सेंटिव्ह आहेत. ऑफकोर्स आपण जर मेगा प्रोजेक्टसाठी गेलात 500 कोटी आणि त्याच्यापेक्षा जास्त इन्व्हेस्टमेंटमध्ये गेलात तर आपल्याला 100% इन्सेंटिव्ह मिळतील. अदरवाईज आपण B झोनमध्ये असाल तर 30%, C झोनमध्ये असाल तर 40%, D मध्ये असाल तर असं D+, असं 10% वाढत जातात इन्सेंटिव्ह. चांगले इन्सेंटिव्ह आहेत, त्याचाही तुम्ही लाभ घ्यावा. आता काही करून प्रत्येक माणसाचं इंडस्ट्री चांगली चालते असं नाही होत. बऱ्याच वेळेला एन्व्हायरमेंटल फोर्सेस किंवा इतर फोर्सेस असतात की ज्याच्यामुळे इंडस्ट्री सीक होऊ शकेल. तर त्यासाठी सुद्धा आपले अनेक 2-3 योजना आहेत की ज्याच्या माध्यमातून आपण सीक रिवायवल करू शकतो. ऑफकोर्स त्याच्यात बँकर्सनी नर्सिंग प्रोग्राम दिला पाहिजे. सीक डिक्लेअर करून आपण त्याला लवकरात लवकर सबसिडी उपलब्ध करणे किंवा इतर जे काही स्टेट गव्हर्नमेंटचे इन्सेंटिव्ह आहेत किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटचे ड्यूज आहेत त्याला रिशेड्यूल करू शकतो. ह्या आहेत. यापेक्षा आणखीन एक गोष्ट आहे की जर खरंच आपण प्रगती केली आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आपलं युनिट चालू असेल तर आम्ही कौतुकही करतो. आम्ही आपल्याला बक्षीस रूपाने जिल्ह्यातले सगळ्यात चांगले 2 उद्योग घटक आहेत त्याला दरवर्षी प्राईज देतो, त्याचा गौरव करतो. आणि नुसतं याच्यावर नाही तर आम्ही एक्सपोर्टचे सगळ्यात चांगले अवॉर्ड्स आहेत. एक्सपोर्टच्या जवळपास 27 सेक्टर्समध्ये आम्ही हे देतो, प्राईज देतो. आणि मी यासाठीच विनंती करतो, वेलजी भाईंना विनंती केली की आपल्यामध्ये सगळ्यात जास्त एक्सपोर्टर आहेत, तर आपल्याला विनंती करतो वेलजीबाईंकडे किंवा आमच्याकडे केव्हाही तुम्ही हे करा, आम्ही तुम्हाला लिंक देऊ, त्या लिंकवर आपला अर्ज द्या म्हणजे आपल्याला एक्सपोर्ट अवॉर्डसाठी आपली निवड करता येईल. कारण एवढं म्हटलं जातं की इथे 50% युनिट असे आहेत की एक्सपोर्ट करू शकतो, हे करू शकतो, पण त्याचा उपयोग नाही. आमच्याकडे एकही अर्ज नाही. निदान
अपेक्षित होतं की कॉम्पिटिशन झाली पाहिजे होती, पण अर्ज नाही आहेत. आणि लक्षात घ्या, हा मार्च महिन्याच्या एंडिंगला मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हा अवॉर्ड दिला जातो आणि याचं निदान 25 ते 30 देशात सरळ प्रक्षेपण दाखवलं जातं तुमचा गौरव करताना. ह्याही गोष्टी लक्षात घ्या. त्यात अजूनही काही रोल यायला लागलेत. सेंट्रल गव्हर्नमेंटने DIC वर बरेचसे भार टाकला. सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या स्कीम आम्हीच राबवतो, कारण MSME DI जे आहे ते त्याच्या माध्यमातून DICच्या माध्यमातूनच आपल्या योजना राबवतात. त्याचबरोबर एक्सपोर्टसाठी फॅसिलिटेशन म्हणून आम्ही काम करतो. एक्सपोर्टच्या ज्या फॅसिलिटेशन्स किंवा जे काही एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशनची जी म्हणजे टायअप आहे, त्यासाठी आम्ही बरंचसं काम करतो. अनेक योजना आहेत, यात आपण निश्चितच लाभ घ्यावा. महाराष्ट्र शासनाची ही सगळ्यात चांगली इनिशिएटिव्ह आहेत. अजूनही इनिशिएटिव्ह वाढतील. आपला सहभाग सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. आपण पुढे यावं. आणि यापूर्वीच मला माहिती आहे की आता आम्हीच इथे 3 प्रोग्राम घेतलेले आहेत, वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रोग्राम घेतलेले आहेत आणि त्यावेळेलाही आम्ही आमच्या स्कीम सांगितलेल्या आहेत. पुन्हा आम्ही आमच्या मैत्रीच्या पोर्टलवर जर गेलात तर आमच्या सगळ्या स्कीम, सगळ्या योजना त्या कशा घ्याव्यात, नुसत्या योजना नाही सांगितलेल्या, त्या योजनांचा बेनिफिट कसा घ्यावा या सगळ्याची माहिती आहे. याशिवाय आपण साळुंके साहेबांनी जो इनिशिएटिव्ह घेतला, वेलजीभाईंचा जो इनिशिएटिव्ह आहे, आमचे संके साहेब आहेत यांचे इनिशिएटिव्ह आहेत, यांच्या माध्यमातून जरी आपण आलात तर निश्चितच राज्य सरकार आपलं स्वागतच करेल. कारण राज्य सरकार आहे तरी कोणासाठी? तुमच्यासाठी आहे. तुमच्या बेटरमेंटसाठीच राज्य सरकारचा उद्योग विभाग काम करतं आणि नियमित आपलं सहकार्य असू द्यावं. धन्यवाद. धन्यवाद बॉम्बे साहेब. आज आपण गव्हर्नमेंटच्या काही स्कीम्सबद्दल जी काही माहिती दिली त्याबद्दल आपला मनपूर्वक आभार. मित्रांनो, आपल्याला 6 वाजेपर्यंत प्रोग्राम संपवायचा आहे. सो कारण इथून बाहेर जाणारे, प्रवास करणारे बरेच उद्योजक आपले आहेत की जे बाहेरून इथे येतात आणि इथे उद्योग करून परत बाहेर जात असतात. सो टाईम कन्स्टेंट आपल्याकडे आहे बऱ्यापैकी. मी सगळ्यांना विनंती करेन की टाईम कन्स्टेंटमध्ये प्रत्येकानं आपलं स्पीच संपवावं. नाव आय रिक्वेस्ट मिस्टर महावीर प्रसाद गुप्ता, AVP मेकॅनिकल मेंटेनन्स, GSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, to talk on the role of the competency building in business growth. Over to Mr. Gupta. So good afternoon, you all, for respected dignitaries in the dais, team of organizers, industry leaders. So in next 15 minutes, we will be talking or we will be sharing on the role of competency building of our teams so that we can grow our business with the help of existing teams in new forms. So friends, when we talk about the business, certainly there are 6 elements, starting from capital investment to the market to the raw material, geopolitical environment, governance policies, but at the center always remains human resources. Without human resources, no business exists. However, in the business, every element is important, whether it is capital investment or market or human resources. But friends, this is fact that over and above, human resources plays a very vital role in the growth of business. But unfortunately, or can say less fortunately, human resources are not being taken care of to the tune they are deserving. And one of the reason is when we hire the people, we first check the physical fitness,
and then we check the basic skills of the person rather than looking at the overall growth and overall exposure of the person to suit that competency. That is why what happens when we assign the task, we put other supervisor over his task. The person is performing the task and one more supervisor is observing how the task is being performed. And sometimes it is observed that task performers are less and number of supervisors are more at the same position, which makes the situation very awkward. But fortunately, in current competitive market, as we all know, that any penny invested on the product add to its cost and certainly affects its margins. To keep our costs minimum, or we can say optimum, without deviating our quality, we need to either isolate or reduce the non-productive tasks and also have the proper control on the wastage, what is being produced throughout the business cycle. Now, in current era, for past few years, organizations have started realizing that yes, this is an area where every organization must pay attention, and people or the industry leaders are thinking how we can do it. Best way, as per our opinion, is if we upgrade skill set or the competency of our own team, we can do wonders. We can do not only the growth in our business, but we can make our business cycle efficient. We are talking so much on competency, but we should know what competency is all about. We always in business talks about the skill, we talk about the knowledge, we talk about attitude, we talk about behavior. But these four are parallel verticals. When we put all these into one basket or in the behavior, in the personality of one person, this is called competency. And to run the business, to perform the task very efficiently, person, whether she or he, must be competent enough, having not only the knowledge and skill, but also desired attitude and behavior. Benefits, if we look at it, for having a competent person with us are as mentioned. So friends, we should have the need to adapt a scientific and a structured methodology how we can make our team competitive or competent. This is the concept that we are using at JSW Coated. We, after having evaluation of number of methodologies starting from conventional process to that of most advanced and structured approach for competency development, we adopted Kudbaj approach, that is very recent, which stands for curriculum development based on ability structure. In this particular approach, first, engagement of the entire team is taken into account. The person who is at the least position to the person who is at the topmost position are engaged in preparing the document. We call it ability matrix or ability assessment document. Based on that document, we assess each and every person working at the shop floor, directly exposed to the product in any form. We conduct practical tests, we conduct oral tests, we conduct the written tests. So after passing through all four tests
and evaluation processes, we come to know what are the gaps in the person which is required to make him excellent and competent person. And based on that, we identify the learning needs. What are the learnings need to be imparted? Learnings may be in the form of on-job trainings, learnings may be in the form of classroom trainings, learning may be in the form of other educational means. After imparting those learnings, we reassess after certain period, or we can say after defined frequencies, and see what level of competency factor of that particular person have been improved. So like this complete cycle runs about. This initiative we have given the name Manthan. As you all know, Manthan is a well-known word. When the Amrit was the result out of agitation of the sea. So in this whole exercise, we compel the person, we compel the assessing team to churn about and take out the best inputs and imparting the learnings to the person. Here we have not done it ourselves. We were assisted by Team Mivek, who are a management consultant, and we invested a lot of money to them. But the beauty of this initiative was that in the whole initiative, none of HR guy was involved. The whole initiative was executed and is being executed by plant managers. The reason is that plant managers are the persons who are operating the show, who know how their subordinates are operating, they are working, and they know better part of it. So this is the team we started with, and in this team everyone is from the plant. They are either functional in charges or they are heading the unit. We have also involved the person from the safety for taking care of administrative tasks required in the whole process. As I told, this approach takes into account the employees at all the level. It starts with, for performing particular trade, what are the tasks the person has to do, or what are the tasks the person is doing for that particular trade. So first we prepare activity matrix, what are the activity are being performed for the task, and then for executing that activity excellently or in the best manner, what abilities the person should possess, and then those ability will become a benchmark for the assessment of the person. These are the matrices of activity at the left hand and corresponding abilities which are required to perform those activities at the right hand. So this right hand document become a document for evaluation of the person in that particular trade. These are the designing phase of the trade, where the functional in charges or their subordinates are explaining to the management consultants how the process is operating, what are the constraints. It also takes into account the past blockages, past hurdles, past incidents, and also takes into account engineering components. Then for each and every trade, customized practical test banks are developed, where the people of each and every trade are assessed.
So this is these are the test benches for welder, forklift operator, EOT cranes, and the fitter. Now, in this slide, if you look at it, the bottom right, these pipes have been bent. These have been bent and prepared with a particular intention to know whether a person is aware of the limitations of vernier caliper. Everybody operates vernier caliper or the number of instruments, but most of the people fails in recognizing what are the limitations of vernier caliper. So now these are the demonstrations and practical tests people are performing. EOT cranes, they are the two tests at the top, and the two tests at the bottom are for the forklift operator. इसका वॉल्यूम नहीं आ रहा बॉस. तब तक तो खत्म हो जाएगा. So these practical tests have been designed in such a manner that we can know particularly or from all the angles that where the person require learning, what are the gaps, what is the level of accuracy, and then the time management and other things. Like this, after having all assessments at all 4 levels, this is the learning passport that is prepared out of assessment. And in this learning passport, not only reflects the detail of the person, but also scores in each of the tests. We call it a competency factor score. And then based on this individual, we have a calculation whereby we come out with overall competency factor on 0 to 4 scale. When we say 0 means the person doesn't know anything, he can't do, neither he don't have the knowledge. When we say 1, the person is having knowledge but he is not able to do the job. When we say 2, the person is having knowledge as well as he can do, but he require additional supervision. He can't do independently. When we say 3, means the person is competent. He can do the job. He is having a knowledge of the subject, and the level of perfection is as required. So this becomes a first reference point for the assessment. When the person scores 4, means the over and above the competency, he can also train the other persons or the other team members. So he can be converted, can be promoted to teach others, to learn others, and enhance the base of the team. So by this, we not only enhance the base, but also we control the variability in the performance. When person do the job, different person come in the shift differently. One person done extremely well, other person do extremely bad. So the variation remains very high. So by this method, we can control that variability. We can limit that variability to the certain band. And over a period of time, we can keep on doing improvements in such a manner. At the bottom, if you look, these are the cards which we issue to the person who carry it in pocket, and this becomes a reference for imparting the training, that whether he has received the training. In the form it has been mentioned over there. There are 2 quotes mentioned. One is, if you look at it, Jisoo Hosen, we call it autonomous maintenance, where the cleaning is not a cleaning. Cleaning gives satisfaction. How it is, this you can see on the slide. Similarly, mantra of learning, that is also equally important. So when we say let us do, certainly we never forget it.
But when we do other, the probability of forgetting is more. Friends, we started this initiative last year, and at the beginning in phase 1, we opted only 4 trades. And out of those 4 trades, when keep on working, expanded to 32. Now in phase 2, we identify 50 trades, and now total trade on which we are working are 97. So we are very hopeful that in coming years, our entire team or entire fleet of the people will be competent, and whatever dream we have taken to start with it, we will achieve. So these all are the trade names. Friends, not to forget, these are few products which are being made from JSW tin plate steel. And better every day is the mantra of JSW. We want everyone to get better day on day. Thank you. Thank you so very much. Thank you very much, Gupta sir. Very interesting and very useful presentation. Rather, I missed few slides because I had some important phone call. Let us take advantage since Mr. Rana is here, Mr. Bhamre is here, I am here, Mr. Veljibai is here. If you have any questions or any suggestions, anyone? There are some few suggestions from this TIMA. So I'll request Virendra ji to say few words. नमस्कार, मैं टीमा का वाइस प्रेसिडेंट सर ठाकुर ऑन बिहाफ ऑफ टीमा यहाँ खड़ा हूँ। डायस पर विराजमान माननीय राणा सर, सालुंके सर, भामरे सर और सम्मानीय डायस, सर्वप्रथम मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एसएमई के लिए बल्कि एमएसएमई के लिए ये इनिशिएटिव लिया कि हमारे तारापुर आए। मैं 1 साल से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। मुझे एसएमई दिया गया है और मेरा अनुभव जो रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुहाना रहा कि उन्होंने फटाफट जो एसएमई के बारे में क्वारीज थी ये था, बहुत ही जल्दी उन्होंने करके डिसबर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ सहकार रहा। तो लोगों के अंदर एक जो भावना है कि भाई एसबीआई अब बहुत पहले जैसी नहीं एसबीआई रही, अब एसबीआई बदल रही। जो राणे सर ने कहा कि एसबीआई अब चेंज हो रही, तो उससे मैं सहमत। अब रही ऑन बिहाफ ऑफ टीमा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे कुछ न कुछ बड़ी विनम्रता से कहना है और मैं विशेष तौर से एसबीआई के लिए अपनी विनम्रता दिखाते हुए कुछ रिक्वेस्ट करूंगा। सर, एसएमई का बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे सारे लोगों ने बताया कि 1/3 ऑफ द इकोनॉमी इज डिपेंड अपॉन हाईएस्ट इकोनॉमी। तारापुर के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा जीएसटी जनरेशन तारापुर से होता है। तारापुर का जीएसटी का हेडक्वार्टर तारापुर में आ रहा है। हमारे यहाँ 140 से 150 मेगावाट का लोड है, जो शायद बॉम्बे से ही ज़्यादा है। और ये सारा कुछ होते हुए बहुत सी फैसिलिटी तारापुर में नहीं है, जिसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं, उसका मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। लेकिन एसबीआई से रिलेटेड सर मेरा 2 रिक्वेस्ट है विनम्रतापूर्वक। एक तो पहली बात कि जो आपका बसिन में जो एसएमई का ब्रांच है, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है तो आपकी एक ब्रांच तारापुर में होनी चाहिए एसएमई की, कि जो तारापुर, पालघर और यहाँ से सर सालुंके सर ने विशेष रिक्वेस्ट करी कि तारापुर, पालघर, डाहनू यहाँ पर वो सर्विस दे सके या करें। ब्रांच लगाना कोई आसान काम नहीं, ये मैं समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर ब्रांच जल्दी नहीं हो सकती, मार्च के पहले नहीं हो सकती है, उसके बाद भी मैं 6-7 महीना लगता है, तो
तो सर मेरी आपसे एक और विनती है कि आप आरएम दीजिए, रिलेशन मैनेजर 3 से 4 दे दीजिए, जो तारापुर एरिया को, पर्टिकुलर तारापुर पालघर एरिया को करे, भले वो कनेक्टेड बसिन से रहे या कहीं से भी रहे। ये मेरी एक विशेष आपका जो सजेशन है उसका नोट उन्होंने ले लिया है। मैं उनसे विनती करता है उनके 2 शब्द बोले, लेकिन आपको एक फायदा अच्छा है कि आपके बाजू में जो बैठे ना उत्तम वर्मा जी साहब आदेश देंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सर मेरा काम ही ये रिक्वेस्ट करना ठाकुर है। साहब, ये आपने सही कहा कि ब्रांच ओपन करना इट विल टेक सम टाइम, बट रिलेशनशिप मैनेजर को यहाँ पे बिठाना इज नॉट अ चैलेंज। हमारी ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्रांच है, तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट के नाम से ब्रांच है। उस ब्रांच में अभी एसएमई रिलेटेड वो ज्यादा नहीं कर, पर हम आरएम को बिठा सकता है। आई थिंक वो तो बड़े शॉर्ट नोटिस हम लोग कर सकते हैं। हम आरएम आइडेंटिफाई करके यहाँ बैठेंगे, सो दैट ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द एसएमई नीड्स हियर इन तारापुर इटसेल्फ। थैंक यू। दूसरा एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और कुछ है आपका पॉइंट? नहीं सर, आप बताइए कि मेरा तो यहाँ पर मैंने सुना कि कम से कम 20 से 35% इंडस्ट्री सिक बनी है, उसके कारण बहुत है। बट अगर बैंकिंग रिलेटेड कोई इंडस्ट्री सिक बनी है, आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए उसको रिजोल्व करना या कुछ रिवाइवल करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए, तो हमारा एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट कर सकता है। आपका लोन 1 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक होने दीजिए। अगर आपके कनेक्ट में कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा, हमारा कहने वाई वो है टेकन दिस इनिशिएटिव, एक तो इस एरिया में लैंड मिलना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है कि जिसने फैक्ट्री शुरू की है उसने बहुत मेहनत से शुरू की है, बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट दिया होगा, उसके भी कभी कभी गलतियां होती है, कुछ कारण से उसका बिजनेस सिक हो जाता है। मे बी सप्लायर या बायर्स या कुछ कारण से हो सकता है, और या भी उसकी भी गलती हो सकती है। तो वो गलतियां देखने के बाद या उनके जो कुछ इश्यूज है वो देखने के बाद हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सबसे, और वेलजी भाई स्पेशल आप क्या कीजिए, इसमें आप थोड़ा ले आइए केसेस जहां पर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। हम बैंकिंग के हायर अथॉरिटीज तक जा सकते हैं, बहुत सारे आरबीआई लेवल पे जा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं हर 3 महीने में एक बार जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है भारत देश की, वो तय करने के लिए आरबीआई गवर्नर हर 3 महीने हमसे मिलते हैं। मैं उसमें हूँ, सीआई का प्रेसिडेंट है, फिक्की का प्रेसिडेंट है, और 3 जो इकोनॉमिस्ट आते हैं। ऐसे 6 जन की हमारी टीम है। लास्ट 20 साल से मैं उस मीटिंग में जाता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि आपने कितना फंडिंग दिया, आपने कितना रिस्ट्रक्चर किया, आपने कितने रिवाइवल किया, और कौन से इंडस्ट्री में आप ज्यादा पे फंडिंग दे रहे हो। तो ये पहला विषय होता है, फिर बाद में हम भारत देश का सोचते हैं। Sir, I will say something. During the Corona time, we know that there was a lockdown. All the retail shops were closed down, especially textiles and others. So here we have 2 types of industries. About 50% textiles, or maybe 40% textiles, 40% chemical, and 10 to 20% in the other sectors, plastics and engineering. So during the lockdown, all the textile shops were closed. So the ready-made garment manufacturing industry was also closed down, and as a result of which, we have about 250 to 300 weavers. All those factories were forced to shut down because they didn't have any business. Also, many of the process houses, they were in turn because they depend on the weavers. So they were also forced to close down their business, and their monthly expenditures are very high, in the sense that they employ more than 1,000 or about 800 to 1,000 people, process houses, and investment is also very high. So they were suffering huge losses during this time. So many weavers were forced to even sell out their units because they are not able to bear the losses and pay the installments of the loans and all that. So, but now I think that time has gone, and most of the units are on the path of revival. And of course, some industries eventually do fall sick. They can be in any sector, chemical or textiles or plastics or engineering. But then that is bound to happen, and reasons can be n number of reasons. So they can seek the help of their friends or association or institution like yours. But then we'll let you know
but we appreciate your initiative, and I hope industries will take benefit. Thank you. सर, मैंने महेश सालुंके जी से कहा कि मेरा टाइम नहीं कट करना, मुझे 2-3 पॉइंट और करना है। मैंने इनसे कहा अभी पीछे, क्योंकि आप सब लोग कहते हैं डाइस कहता रहा। मेरा सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू सालुंके जी से है, जिस पर शायद आपने गौर नहीं किया है। क्या होता है, कोई इंडस्ट्री लगाने जाता है, आज की तारीख में नई इंडस्ट्री लगाता है, मशीनरी लाता है, और सब दो चीज़ें उसमें जीएसटी लगती है 28% ऑन मशीनरी। बैंक हमको लोन देती है, लेकिन वो जीएसटी, जैसे आपने 5 करोड़ की मशीनरी ली है, उस पर 28% आपने लगा दिया, तो आपका 1 करोड़ 40 लाख रुपया बैंक ने आपको लोन दे दिया। लेकिन वो 1 करोड़ 40 लाख रुपया जो है, उसको सेटअप करने के लिए उस इंडस्ट्री को अगले 5 साल लगते हैं, और अगले 5 साल लगते हैं, उस पर हम बैंक को ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। आप समझे ना? तो ये इशू जो है, ये बहुत बड़ा नेशनल लेवल का इशू है। ये कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है, या तो जीएसटी डिपार्टमेंट बैंक को उतना पैसा रिटर्न कर दे, लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करने के लिए कहे। हम ये नहीं कह रहे हमें दे, वो जीएसटी रिटर्न कर दें और बैंक के अगेंस्ट में करें। ये एक मुद्दा। दूसरा, जो एसएमई के लिए और से एक मुद्दा है कि जो इसमें सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, सीएलएस के सब्सिडी जो है, उसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। मेरे ख्याल से डीआईसी सर, जो भामरे सर हैं, उनको भी शायद सीएलएस की जानकारी, महाराष्ट्र सरकार की नहीं, 5% पहले थी, अब शायद वो कम कर दिया आप लोगों ने। आएगा, ठीक है, वर चांगला मी तुम्हाला भेटतो। तो ये है, तो सीएलएस के बारे में, ये डायरेक्ट सब्सिडी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, प्रोडक्शन बेस्ड सब्सिडी है, इसकी पूरी जानकारी अवेयरनेस इंडस्ट्री वालों को नहीं है। तो ये अवेयरनेस की आवश्यकता है। सालुंके सर, हम लोग पूरा टीमा, आपके वेलजी भाई को ले लिया, मतलब पूरा टीमा है, समझ लीजिए आप। तो ये पूरी, आणि उसके लिए ये मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसको हायर लेवल पर ही डिस्कस करिए। जीएसटी का मुद्दा है, और ये है, आप आपके मेंबर्स को बुलाओ, सबको, हम सबको ले आते। मेंबर आ जाएंगे, आप लोगों का फायदा कराइए। कल आते हैं क्या? हम लोग को क्या, हम लोग इंडस्ट्री वाले हैं सर। देर से दुरुस्त आएगा। और तीसरा मुद्दा यह है कि जो लैंड के बारे में, इस बारे में कहा गया, ऐसा इशू नहीं है, और महाराष्ट्र जाने के लिए कोई सर तैयार नहीं है। कांग्रेस सर, एक रामायण की चौपाई आपको याद करा दूं, आप याद कर लीजिए। जहां बसे वही सुंदर देशा, जो प्रतिपाल है वही नरेशा। जहां आप रहते हैं, जिस सुंदर प्रदेश में करते हैं, और जहां पर आपका रोजी रोटी, वही सबसे अच्छा प्रदेश है। लेकिन उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना डीआयसी का काम है सर। आता त्याच्यावर नंतर चर्चा करूया, आणि म्हणून म्हणतोय त्याच्यावर नंतर चर्चा करूया, विस्तृत चर्चा। मी तुमच्या ऑफिसला येत असतो, मॅडम पण असतात तिथे। तर ये सब सारी चीजें हैं। मैं तो ये एसबीआई के लिए यहाँ खड़ा हो गया, नहीं तो मैं नहीं बोलता ये सब। ये तो सब रोज की चर्चा होती रहती। और एसबीआई के सर आए हैं, इसी का लाभ लेते हुए मैंने सारी बातें कही, बहुत सी चर्चा है। मेरा एक काम तो हो गया, आरएम यहाँ नियुक्त हो गया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much for your suggestions, and it's well noted. So सेशन खत्म करने से पहले मैं आज के जो सभी महानुभाव यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। स्पेशल थैंक्स टू जीएस राणा सर, गोगरी सर, भामरे सर, देन जेएसडब्ल्यू गुप्ता सर, सुदेश वैद्य जी। मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। संके साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं, और 2-3 एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आने वाले थे मेरे ख्याल से। कोई आया हुआ है वाड़ा इंडस्ट्री, पालघर इंडस्ट्री एसोसिएशन से? पालघर, संके सर, पालघर से। ओके, चलो ठीक है। ये तो जस्ट शुरुआत थी, आगे भी बहुत कुछ करते रहेंगे हम लोग। आपका सुझाव, आपके सजेशंस हमें बताते रहिए, और इसी के मद्देनजर रखते हुए मैं सभी का धन्यवाद करके ये सेशन खत्म करता हूँ, और आगे का सेशन के लिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं।